Hi, this is Ashish Purushottam, and today we will discuss role of India in Afghanistan. So, what is the context of this topic? We all know that recently U.S. government elected its own president, that is Joe Biden, and accordingly he announced withdrawal of the U.S. forces as soon as possible. And in accordance with that, U.S. Secretary of the State Anthony Blinken wrote a letter to the Afghan president, which is Ashraf Ghani, articulating a new plan to kickstart Afghanistan's surrounding peace process. We all know that lots of massacre is going on in the Afghanistan due to a tussle between pro government forces and anti-government forces that are basically Taliban's. And what was the proposal of Secretary of the State Anthony Blinken's letter? Basically, there were two proposals. First was to convey a six-nation meeting. Party to that you need to be Foreign Minister of the Russia, China, Pakistan, Iran, India, and a second was a separate high-level meeting between present Afghani government and Taliban, and it need to be conveyed in Turkey. And they also called for a truce of 90 days and gradual reduction of the violence accordingly based on all these kind of the development. But they draw quite a sharp reaction from the present Afghan government, that is president, that is Ghani, and he was deeply angry about the letter since they don't want to negotiate with a terrorist organization like the Taliban. And they basically did a backlash and said that Afghan government will never accept a coerced and imposed peace in the Afghanistan. Now, this was the context of entire debate. Now we'll see why we are important. So, first time India was invited officially or formally into the Afghan peace process. In the past, we are the party to the Afghan peace process, but we were always on the back channel. On the back channel diplomacy, we were quite good, but we were never officially called into the Afghanistan peace process. And first time we were called into this. That's why it's quite important to discuss what is the role of India in the Afghanistan. But before that, we will discuss chronology and characters in the Afghanistan. So quite important, and I am trying to sum up the entire 200 years of the contemporary history of the Afghanistan in one slide. Let us see if I am able to explain all the key things correctly or not. So first, Afghanistan is basically known as the graveyard of the empires. Why it is known so? Because we will see whomsoever forces tried to invade Afghanistan failed miserably. First, it were Britishers who tried to colonize Afghanistan, and they have to back off in early 80s. Now, second party to Afghanistan invasion was the Soviet Union or USSR, and they tried to invade Afghanistan in order to prop up the communist government against a growing insurgency. What was the insurgency? We will see. Basically, in 1989, USSR had to withdraw from the Afghanistan due to the resistance from the Afghanistan. And basically, who were those of Afghanistan? There were Mujahideens. And Mujahideens were supported by the US, Pakistan, Saudi Arabia, Iran, China, and Egypt. And what was the genesis of this Mujahideens? So basically, in 1992, Dr. Nazibullah government, which was supported by the Russia or the USSR, then USSR, fell to the Mujahideens. The Mujahideens were basically trained into the Pakistan's madrasas, and they were basically Pashtun fundamentalist student, and they were quite religious, hardcore person, and they tried to destabilize Dr. Nazibullah government into Afghanistan, and ultimately they succeed in that also. And by 1998, Taliban's or Mujahideens ultimately threw away the established government of the Afghanistan and took over the entire governance of the Afghanistan into their own hands, at least into the rural areas. They were quite dominant. I mean to say the Talibans were quite dominant. And we also met in 1999 one famous
IC-814 hijacking took place, wherein one flight of Air India was flying from the Kathmandu to the Delhi, was hijacked by the terrorist, and ultimately we have to release few notorious kind of the terrorists, like one from the JOD chief, and other one is quite important, who was ultimately involved in the Daniel Paul murder. So we have to pay a lot during that time. And finally in 2001, 9/11 attack took place, and US ultimately invaded Afghanistan in order to root out all the terrorists from the Afghanistan. And interestingly, just before one day of 9/11 attack, Ahmad Shah Massoud, who was known as the Panjshir ka Sher, he was quite liberal, and he pitched for the equal right of the women, which was quite radical for a tribe country like Afghanistan, who was assassinated by two Arabs masquerading as a journalist just one day before the 9/11 attack. And there are conspiracy theory in the realm of international and strategic affairs that somehow Ahmad Shah Massoud was quite privy to the 9/11 attack and tried to prevent it as well. But ultimately he was assassinated, and in the 9/11 attack there were at least 9 Arab citizens were involved. So there is a link between all these things. Still, it's a conspiracy theory. We'll see who are the parties to the Afghanistan. So basically a proxy war of hegemony is going on in this Afghan area due to its geostrategic and geoeconomic importance, and parties to it are India, China, Iran, Pakistan, Russia, Turkey, USA and Saudi Arabia. These are the key parties and players into the Afghanistan great game of the war, I will rather say. So now, why Afghanistan is important for India? There are basically 3 or 4 reasons. We will discuss all these reasons one by one. First is geostrategic. Friends, in case of the two-front war between India and China or Pakistan, or two-front war between if there is a possibility of two-front war with the Pakistan, so that we can cater Afghanistan as a friend, and we can open a two-front war with the Pakistan bordering our borders and the Afghanistan borders. So in order to contain Pakistan, we also need to have Pakistan a friendly government in the Afghanistan. That's why Pakistan doesn't want a presence of India in Afghanistan. Hope it's clear to you. It means यदि टू फ्रंट वॉर होता है इंडिया का चाइना और पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान का इंडिया और अफगानिस्तान के साथ, तो अफगानिस्तान में यदि कोई फ्रेंडली गवर्नमेंट रही तो हम कंटेन कर पाएंगे पाकिस्तान को उसके और अपने रीजन में उसके, क्योंकि पाकिस्तान शेयर्स ए लार्ज एरिया विथ अफगानिस्तान. सो उनको काफ़ी फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ेगी उस एरियाज़ में. सो उनकी फोर्सेस अपने एरियाज़ में वेस्टर्न सेक्टर में काफ़ी वीक हो जाएगी, सो नॉर्दर्न सेक्टर में काफ़ी वीक हो जाएगी. सो दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट अफगानिस्तान में कोई एक फ्रेंडली गवर्नमेंट हो हमारे लिए. ऑल्सो दैट्स वाई पाकिस्तान नहीं चाहती कभी कि हमारा इंडिया का फुटप्रिंट्स वहाँ पे कभी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि उनको पता है उनके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. नो, व्हाट इज़ पाकिस्तान पॉलिसी इन द अफगानिस्तान? बेसिकली पाकिस्तान की एक फेमस पॉलिसी है दैट इज़ नॉन एज स्ट्रेटेजिक डेप्थ. It means having a complete control over government of Afghanistan in order to weed out influence of the India. We understand, अभी तक आपको समझ में हो गया होगा कि क्या गेम चल रहा है. पाकिस्तान चाहती है कि इंडिया वहाँ से दूर रहे और इंडिया वहाँ अपना प्रेजेंस बनाना चाहती है, तो दोनों के बीच एक टसल चल रहा है. ऑल्सो इन द इंटरनेशनल पार्लेंस और इन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट जब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस अच्छे नहीं हो जाते तब तक देयर कांट बी ए परमानेंट पीस इन द अफगानिस्तान. इट मीन्स व्हाट डज इट मीन्स? तो हम इससे कोई ड्रा कर सकते हैं. इट मीन्स जस्ट बिफोर जो एंथनी ब्लिंकन ने एक लेटर लिखा उसके जस्ट कुछ दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर अकॉर्ड साइन हो गई. तो ये कोई इंसिडेंस नहीं था. माना जाता है स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में और इंटरनेशनल रिलेशन में कि कहीं ना कहीं यूएस ने परसुएट किया इंडिया और पाकिस्तान को एक सेम टेबल पे आने के लिए, सो दैट दे कैन पीसफुली विड्रॉ फ्रॉम द अफगानिस्तान. सो इट इज़ वाइडली ए कंस्पिरेसी थ्योरी एज वेल, बट कहीं ना कहीं कोई रिलेशन मिलता है. चलिए कोई बात नहीं, वी विल सी नाउ व्हाई जियो इकोनॉमिकली अफगानिस्तान इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया.
Friends, you all know that Central Asia is quite rich into the natural resources, and they are also known as the granary of the world. Since wheat production वहाँ पे काफ़ी होता है, और उनका उनके लैंड्स जो हैं काफ़ी रिच होते हैं, ठीक है ना. दैट्स वाई, और वी ऑल्सो नीड एसेस टू द सेंट्रल एशिया इन ऑर्डर, दैट्स बिकॉज वी आर एनर्जी starved country and we constantly need energy and resources. That's why we want a route, transit route from our country to the Central Asia. That's why Afghanistan में काफ़ी मिल रहा है, और हमारे लिए एक वेस्ट एशिया को भी एसेस करना काफ़ी ईजी हो जाएगा यदि हमारे पास अफगानिस्तान के थ्रू कोई ट्रांजिट रूट मिल जाए. ऑल्सो देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ ह्यूज रिसोर्स ऑफ मिनरल, स्पेशली ऑफ द कॉपर इन टू द अफगानिस्तान. दैट्स वाई वी वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट इट एज वेल. नाउ the historic reason for also for India to protect its borders, since most of the attack on the Indian soils come from the Khyber Pass. Khyber Pass, you can see into the map Khyber Pass कहाँ पे है. And also there are few contemporary relation. There is very strong P2P connection. हमने बचपन में काबुलीवाला की स्टोरी सुनी होगी, जो अफगान से लोग आते थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था. फ्रिक्शनल स्टोरी बट काफ़ी अच्छी है. सो इट शोज फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड अफगानिस्तान पीपल. इंडिया की बॉलीवुड की मूवीज़ और सॉन्ग्स अफगानिस्तान में क्वाइट पॉपुलर है. एंड वी प्रोवाइड क्वाइट चीप डर्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ टू द ऑल ओवर वर्ल्ड, जो एटलीस्ट अफगानिस्तानी और अफ्रीकन लोगों को काफ़ी हम चीप मेडिकल फैसिलिटी एट फ्रेंडली और कॉस्ट फ्रेंडली प्राइस पे प्रोवाइड करते हैं. दैट्स वाई दे ऑल्सो वांट ए गुड रिलेशन विद अस. नाउ ये तो हो गया कि हम कैसे अफगानिस्तान को देखते हैं. वी विल सी हाउ अफगानिस्तानी सीज अस. सो देयर इज़ वन फेमस कौटिल्य थ्योरी दैट नेवर इज़ नेचुरल एनिमी एंड नेवर इज़ ए नेचुरल फ्रेंड. तो कौटिल्य की थ्योरी क्या कहती है कि जो नेबर होता है वो हमारा नेचुरल एनिमी होता है, और पड़ोसी जो होता है वो हमारा नेचुरल फ्रेंड होता है. इट अप्लाइज एवरीवेयर, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट थ्योरी. एंड बारिंग फ्यू एक्सेप्शन, लाइक हमारे बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन है, भूटान के साथ अच्छे रिलेशन है, बट पाकिस्तान के साथ काफ़ी ख़राब रिलेशन है, और चाइना के साथ भी डिटोरिएट हो रही है. दैट्स वाई वी आर, बिकॉज वी आर नेबर्स. उनके जो नेबर्स हैं वो इमीडिएट नेबर्स, वो हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं. एग्जाम्पल कोरिया हो गया या जापान हो गया. सो वी कैन ड्रॉ ए कंक्लूजन. ऑल्सो एनी सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान वुड हैव लाइक टू हैव गुड रिलेशन विद इंडिया. वाई विल सी, बिकॉज कि एक सिविलियन गवर्नमेंट जो होती है उसकी क्रेडिबिलिटी होती है. इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वो काफ़ी प्रमोट करती है कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो सिविलियन हो. That's why any civil or also we can see that Taliban is constantly trying to act like a responsible player or responsible kid, as we all know that Taliban is known for its notorious deed. उन्होंने hijack भी किया हमारा, but now they are trying to be mature guys, since उनको पता है कि शायद वो पावर में आ जाए, इसलिए they are trying to be mature. और रिफ्लेक्ट होती है ये सब चीज़ें, जैसे पोस्ट आर्टिकल 370 एब्रोगेशन. व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ द तालिबान? यू विल बी अमेज्ड दैट दे सेड दैट कश्मीर इज इंडियाज इंटरनल अफेयर्स एंड दे तालिबान कांट सपोर्ट पाकिस्तान ऑन इट. So it's quite a tectonic shift in the policy of the Taliban, and Pakistan was quite pissed off because of this change. क्योंकि उनका एक बच्चा था, उनका बड़ा किया हुआ बच्चा था, और उनके ऊपर ही अपना मेरी बिल्ली मेरे ऊपर म्याऊं कर रही है, वही वाली बात हो गई थी यहाँ पे. Also officially we share a 94 kilometer boundary with Afghanistan, which is officially, since we all know that Kashmir एक large part is occupied by the Pakistan, and वहीं से पास होती है कौन सी अपनी गिलगित बाल्टिस्तान, जहाँ से हमारी बॉर्डर पास होती है, जो टच होती है इंडिया और अफगानिस्तान की. ऑफिशियली इट्स अ स्टैंड ऑफ इंडिया. नाउ we will see what is the cause of enmity between the Afghanistan and the Pakistan, since we all know that relation between Afghanistan and Pakistan is quite गड़बड़वाला, एंड इट ऑल क्रेडिट गोज टू द कॉलोनियल लिगेसी. सो बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं डूरन लाइन, और इट वाज ड्रॉन बाय द कॉलोनियल मास्टर्स, लाइक हमारे और पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो है रेड क्लिफ लाइन, या इंडिया के और चाइना के बीच जो है मोहन लाइन. तो ये और कॉलोनियल लिगेसीज हैं जिसके कारण डिस्प्यूट्स हुई हैं. So basically Duran line is not acceptable to Afghanistan, and they want to integrate Pashtun areas, that is northwest frontier territory of the Pakistan with the Afghanistan. और वहाँ पे पश्तून्स काफ़ी पॉपुलेशन में है, काफ़ी मेजॉरिटी में है. दे वांट टू इंटीग्रेट, और बेसिकली दे वांट ए लार्जर ऑटोनोमस एरिया ऑफ द पश्तून लैंड. पश्तून लैंड की तरह, या पश्तूनाबाद या पश्तूनिस्तान की तरह एक मांग कर रहे हैं. और उन्हीं से रिलेटेड है पश्तून तफस्सुफ मूवमेंट, which is quite famous as PTM. That's why Pakistan is in constant fear of losing NWFP,
एंड वो नहीं चाहते कि उनके साथ बांग्लादेश पार्ट 2 या बांग्लादेश सीज़न 2 हो जाए. दैट्स वाई वो चाहते हैं कि हाँ अफ़गानिस्तान में कोई स्टेबल और कोई मजबूत गवर्नमेंट नहीं आए ताकि हमारा कुछ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर टेरिटरीज वो हमारे से चली जाए. Also, Pakistan naturally want to maintain a firm grip into the Afghanistan government. We know the regions. Now, we'll see what are the footprints of the India in the Afghanistan. Basically, India is largest donor for the reconstruction and development post US invasion to the Afghanistan. So quite important. We have invested around $3 billion in the Afghanistan. So quite a huge amount for a country like India. And what are our construction and development footprint? So first is at least 40,000 Afghani students got study visa in India till date. और वो काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं इस बातों की हम लोग उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. वी हैव बिल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग अकाउंटिंग लाइक 90 मिलियंस. सो एक काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई है उन्होंने अफगानिस्तान के पार्लियामेंट की. एंड इट वाज क्वाइट अप्रिशिएटेड बाय द अफगानी पीपल एज वेल. वी आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टिंग ट्रांसमिशन लाइन्स. वी हैव कंस्ट्रक्टेड फेमसली नोन एज द फ्रेंडशिप डैम और सलमा और डैम in the Afghanistan's Herat province, and due to Indian assistance, Afghanistan now become independent on the electricity and irrigation kind of thing from the neighboring country from like Iran or the Pakistan. So ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था. जो फ्रेंडशिप डैम और जो हेरात प्रोविंस में बन रहा है वो इंडिया ने एटलीस्ट अपने पूरे पे करके बनवाया और इट अकाउंटेड लाइक $290 million. So quite huge amount again. We also constructed the Jarhan highway in the Afghanistan and costing $135 million. It's also important for the connectivity purposes in the Afghanistan. We are also trying to invest into the ore mining. वी कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द अफगान नेशनल फोर्सेस. हमारे यहाँ OTA और IMA के कोर्सेज बहुत सारे होते हैं जिसमें हमारे फॉरेन फ्रेंडली नेशंस के जो आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं उनको इनवाइट करते हैं. एंड वी प्रोवाइड ए गुड ट्रेनिंग टू दैम. वी ऑल्सो प्रोवाइडेड चीता हेलीकॉप्टर टू द अफगानिस्तान नेशनल फोर्सेज. एंड बिकम क्वाइट कंट्रोल से एज वेल क्योंकि तालिबान काफ़ी परेशान हो गई थी इससे क्योंकि उनको लगता था अफगानी पीपल तो उनको अटैक करेंगे क्योंकि और कोई है नहीं. सो इंडिया कॉल इट कि ये बस डिफेंस पर्पजेज़ के लिए होगा. जो भी चीता होगा वो बस डिफेंस पर्पजेज़ के लिए होगा और ऑफेंस मिलिट्री ऑफेंस के लिए वो यूज़ नहीं होगा. ऑल्सो वी आर पार्टी टू द हार्ट ऑफ द एशिया कॉन्फ्रेंस. दैट्स वाई वी आर क्वाइट इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान. नाउ द बिग क्वेश्चन, आर वी डूइंग इनफ? हमने इतना तो किया बट इट इज़ इनफ और नॉट. विल सी वन टू वन. First, what is India's position into Afghanistan? So basically India say that peace process in Afghanistan must be led, owned and controlled by the Afghan only. हमने देखा ये भी कि जो अफ़गानी करंट प्रेसिडेंट है उन्होंने भी ये कहा था कि कोई भी हम एक्सटर्नली इम्पोज्ड पीस प्रोसेस रिक्वेस्ट नहीं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि दे आर क्वाइट ट्राइबल पीपल आर क्वाइट प्राइड पीपल. उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमारे ऊपर इम्पोज करे कोई चीज़ें. सो दैट्स वाई इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई कि कोई भी पीस प्रोसेस होगी वो लेड ऑन एंड कंट्रोल बाय द अफगानी होगा, कोई बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं होगा उस पर. ऑल्सो हाउ इंडिया सीज तालिबान. सो इंडिया का एक फेमस पॉलिसी है डिहाइफनेटेड पॉलिसी. वी डोंट सी गुड और बैड तालिबान. हमारे लिए तालिबान इज़ तालिबान. सो सिंस वी आर हैविंग दिस हैंगओवर ऑफ IC-814 का हाइजेक हमने वहाँ पे देखा है कि तालिबान ने उन्हें कैसे परेशान किया. सो वी आर हैविंग दैट काइंड ऑफ इम्प्रेशन स्टिल विथ अस कि तालिबान तो बड़ा डेंजरस काइंड ऑफ चीज़ है. सो दीज आर थिंग. एंड नेचुरली पाकिस्तान हैव द बिगर लेवरेज ओवर द तालिबान सिंस उनका ही बच्चा है तो उन्होंने उनको ट्रेन किया तो नेचुरली वो उनकी बात सुनेंगे. Also, India is restricted mere as a soft power, and it was basically under the US pressure that we are restricted as a soft power in the Afghanistan since Pakistan persuaded US to keep India as a soft power only क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहते थे कि इंडिया का वहाँ कोई मिलिट्री फुटप्रिंट की रीज़न आपको पता चल गया होगा. Also, India is almost isolated in the heart of the Asia since none of the parties to the Afghanistan peace process wants India as a player. रशिया, चाइना, टर्की कुछ भी इंडिया चाहती है कि इंडिया सब चाहते हैं कि इंडिया अलग ही रहे. नाउ व्हाट इज़ वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया? वे फॉरवर्ड इज़ फर्स्ट डू वॉट एवर नीडेड टू स्ट्रेंथन द प्रेजेंट फ्रेंडली रिलेशंस. हमें जो भी बन सकता है करना चाहिए टू मेंटेन द फ्रेंड रिलेशन, चाहे वो अफगानिस्तानी अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट हो या तालिबान हो. वी नीड टू इंगेज बोथ द प्लेयर्स इक्वली क्योंकि हमें हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ के हमारा इंटरेस्ट जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट काफ़ी है तो वी नीड टू हैव द फ्रेंड रिलेशन.
ऑल्सो वी नीड टू इम्प्रूव आवर रिलेशन विद द ईरान, और यहाँ पे एक नया प्लेयर आ गया ईरान, कैसे, विल सी. Iran is quite important for the Afghanistan, since we know that it's a neighboring country to the Afghanistan. एंड पोस्ट यूएस सेंक्शन बेसिकली ट्रम्प गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट थी ईरान के ऊपर, उन्होंने P5 डील भी कैंसिल कर दिया था विद ईरान, एंड दे हैव इम्पोज ए क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस ऑन द ईरान, और ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं हुआ, बट दे हैव टू स्लाइड विद द चाइना के साथ. क्योंकि चाइना इज़ एनर्जी स्टाफ कंट्री, चाइना को सस्ते में तेल मिल गया और ईरान को पैसा मिल गया, डॉलर मिल गया, जो सो दैट दे कैन सर्वाइव. So Iran is sliding fast in the pala of the Russia and this China. So we need to look for that. हम उसका हमें indication कहाँ से मिलता है? Recently Iran has decided to go with the China on the rail line with the Chabahar पोर्ट टू द जहदान. तो चाबार पोर्ट से तो जहदान की जो रेल लाइन जा रही थी उनको चाइनीज़ को मिल गया. और ऑल्सो रिसेंटली 3-4 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि ना फरजाद बी गैस फील्ड जो ONGC विदेश की एक ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करती थी, दैट ऑल्सो वेंट टू द पाला ऑफ दिस. ईरान ने उनको अपने पाले से झाड़ लिया और उन्होंने कहा कि अभी इंडिया को हम नहीं देंगे कुछ ऐसा. तो वी नीड टू वर्क अपॉन द ईरान in order to improve our footprints in the Afghanistan. Also, there is third option that we need to improve our military footprint to protect our investment into the Afghanistan. We saw that we have invested like in the tune of $3,000 billion. This is a huge amount. So there are debate among the strategic players that we need to have some military footprint into the Afghanistan. But it's quite controversial since there can be some backlash or backfire on it. So we are quite reluctant to provide a hard foot or military footprint in the Afghanistan. In the past, US requested India to intervene to the Iraq war, but it was denied by the then Bajpayee government, and it turned to be the quite good decision by the then government. क्योंकि हमने देखा कि ईरान में हुआ क्या बेसिकली. सो इस टाइप का कोई मिलिट्री फुटप्रिंट इंडिया यदि करती है तो उसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं. तो हमने अभी तक जो नाम कमाया वो ख़राब हो सकता है. ऑल्सो वी कैन यूज़ आवर लेवरेज एज ए लार्जेस्ट डोनर. हमने देखा कि वी हैव इन्वेस्टेड एज अ लॉट. वी कैन यूज़ लेवरेज ऑफ दैट विद द कंट्रीज लाइक विद द प्लेयर्स लाइक तालिबान एज वेल एज द गवर्नमेंट इन द अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू अपना जो भी डील है उसको फिक्स करने के लिए. We also need to shift theater of war from the South Asia to the Afghanistan. It is a policy endorsed by the NSA, Ajit Doval, as well as US frequently do it. US कभी अपने ज़मीन पे लड़ाई नहीं लड़ती, वो हमेशा दूसरों के यहाँ जाके लड़ाई लड़ती है. और इस पॉलिसी को नाम दिया था ऑफेंसिव डिफेंस का. सिंस अपने घर पे आप यदि लड़ते हैं तो देयर आर क्वाइट ह्यूज चांसेस ऑफ कोलेटरल डैमेजेस. सो आप यदि अपने थिएटर ऑफ वॉर को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, यदि पाकिस्तान को वेस्ट एशिया और पाकिस्तान को यदि आप अफगानिस्तान में इंगेज करते हैं तो योर इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी विल बी क्वाइट सिक्योर्ड बाय दैट वे. सो इंडिया नीड टू शिफ्ट ए थिएटर ऑफ वॉर फ्रॉम साउथ एशिया टू अफगानिस्तान. Also, you can detach Taliban, but try to engage it as well. We know that Taliban is a quite important player. सब लोग उसको engage करें तो we are shying off from the Taliban. We need to engage them, detach them, but try to keep this official communication door open. And I hope, and it is basically back channel diplomacy between India and Taliban is going on. ये हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है. अदरवाइज तालिबान की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट नहीं होते. Also, there is one famous quote into this Afghanistan. It says that India and USA do have the watch. India और USA के पास वॉच तो है, बट तालिबान और पाकिस्तान के पास टाइम है. सो वॉच तो है हमारे पास और US के पास हम लोग कर सकते हैं, लेकिन टाइम का जो फैक्टर है वो हमेशा तालिबान और पाकिस्तान के पास है. दैट्स वाई वी नीड टू वर्क फास्ट, वी नीड टू एक्ट प्रोएक्टिवली in order to save Afghanistan from further sliding to the deconstruction and the war. That's all from my side on the India-Afghanistan relation. Hope you like. आपको जो भी जैसा लग रहा है please comment upon that. Thank you so much. Okay. अच्छा.